नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, बीमा करार में दस्तखत करने के अलावा विकल्प नहीं। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट आई है अभी रिसेंटली इंश्योरेंस पे है, और इसमें बहुत ही डिटेल में केस लॉ डिस्कस किया गया है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिस्कस किए गए हैं, और अल्टीमेटली ये होल्ड किया गया है कि जो बीमा कंपनी ने जो है क्लेम था इंश्योर्ड का, वो गलत तरीके से किया है, रिजेक्ट किया है, रेपुडिएट किया है। और ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है। ये बहुत सारे इसमें प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिस्कस किया गया है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और उससे पहले मैं आपको ले जाऊं जजमेंट की तरफ, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप सब्सक्राइब, शेयर और फीडबैक और लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें, और इससे जो है मुझे मिलता है सपोर्ट। तो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ उस जजमेंट की तरफ। क्या है वो जजमेंट, तो बने रहिए आप। तो जैसा ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है डिसीजन ऑन फैक्ट्स जो है पैरा 1 में जो फैक्ट दिया गया था, अपेलेंट सिक्योर्ड ए स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी from the respondent on 20th July 2012. The policy was effective from 20th July 2012 to 27th July 2013. It was meant to cover a shop situated in the basement of the building. However, the exclusion clause of the contract specifies that it does not cover the basement. Due inspection of the shop was made, which was actually situated on the other side of the road from the office of the respondent number 1. Not only the shop of the appellant, but yet another shop similarly situated was also insured by the respondent number 1. The appellant continued to pay the premium promptly. The appellant put up the further construction for which due notice was given, and due inspection was also made. The shop met with a fire accident for which the appellant raised a claim. The surveyor of the respondent number 1 also made an inspection, on the basis of which the appellant was instructed to furnish its shop for the purpose of due evaluation. While arriving at the sum payable, the surveyor did not notice the fact that earlier inspections were made, and that the fact that the shop was in a basement was to the knowledge of the insurer. The claim made was repudiated by the respondent number 1, taking umbrage under the exclusion clause. और इसमें जो है बहुत सारे डिटेल में जो डिस्कशन किया ऑनरेबल पैक्स ने, वो जो है ग्रेवामेन ऑफ द केस, whether an exclusion clause destroying the very contract knowingly entered can be permitted to be used by a party who introduced it becomes a beneficiary and then to void its liability. इसमें प्रिंसिपल्स है एडिशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो है इसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में डिफाइन किया गया एडिशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर्ड बाय वन पार्टी टू बी साइंड बाय the party in a weaker position, usually a consumer who was little choice about the terms, also claimed contract of adhesion, adhesion contract, adhesionary contract, take it or leave it contract, lieutenant contract। ये बहुत ही एक जबरदस्त प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। इसी के बेस पे एक हेनरिएट प्रिंसिपल भी है जो अनकॉन्शनेबल क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हम सर्विस मैटर में बहुत सारे मैटर्स करते हैं। तो इस चीज के बारे में जो इसमें कहा गया है। और adhesion contracts are otherwise called standard form contracts. Contracts of insurance are one such category of contracts. These contracts are prepared by the insurer having a standard format upon which a consumer is made to sign. He has very little option or choice to negotiate the terms of the contract except to sign on the dotted lines. The insurer, who being the dominant party, dictates its own terms, leaving it upon the consumer either to take it or leave it. Such contracts are obviously one-sided, grossly in favor of the insurer due to the weak bargaining power of the consumer. The concept of freedom of contract loses some significance in a contract of insurance. ये जो है इसमें काफी डिटेल में ये सारा किया गया है। फिर एक एक्सक्लूजन क्लॉज के बारे में भी है। An exclusion clause in a contract of insurance has to be interpreted differently. Not only the onus, but also the burden lies with the insurer when reliance is made on such a clause. This is for the reason that insurance contracts are special contracts premised on the notion of good faith. और इसके बारे में काफी डिटेल जो है डिस्कशन की गई है। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने जो है इसमें ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर, गुड फेथ एंड नोटिस पे एक काफी डिटेल डिस्कशन की है इसमें। और एक ब्लू पेंसिल का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी की है। इन सच ए सिचुएशन द डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लू पेंसिल विच स्ट्राइक्स ऑफ द ऑफेंडिंग क्लॉज बीइंग void ab initio has to be pressed into service, the said clause being repugnant to the main contract and thus destroying
it without even a need for adjudication certainly has to be eschewed by the court. The very existence of such clause having found to be totally legal and detrimental to the execution of the main contract, along with its objective, requires an effacement in the form of declaration of its non-existence, वारंटिंग ए डिसीजन बाय द कोर्ट अकॉर्डिंगली। ये बहुत ही बड़ी ऑब्जर्वेशन है ये ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की, और इसके बेसिस पे जो है बहुत सारे इंश्योरेंस क्लेम जो है बात बन सकती है। और फिर इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो क्या डेफिनेशन दी गई है वो सारा किया गया है। फिर 2019 को भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है, और अल्टीमेटली जो एनालिसिस किया गया है वो पैरा 36 ऑनवर्ड है। बोथ द फोरम्स हैव हेल्ड कंकरेंटली दैट पॉइंट नंबर 1 वाज conscious of the fact that the contract was entered into for insuring a shop situated in the basement. The aforesaid position is not only a factual one but also accepted by the respondents, as no challenge has been laid against the impugned order. Similarly, there was no specific denial on the non-compliance of adequate notice. National Commission has not given any finding on this aspect, although it was dealt with in extenso by the State Commission on a reading of Section 21A of the Consumer Protection Act 1986. It is clear that it is not akin to Section 96 of the Code of Civil Procedure 1908. Even otherwise, the impugned order has not considered all the relevant material which were duly taken note by the State Commission. तो इसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो है फिर अल्टीमेटली जो है पैरा 39 में इसमें जो ऑब्जर्वेशन आई है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। Non-compliance of Clause 3 and 4 of IRDA Regulations 2002, preceded by unilateral inclusion and thereafter followed by the execution of the contract, receiving benefits and reputation after knowing that it was entered into for a basement, would certainly be an act of unfair trade practice. This view is fortified by the finding that the exclusion clause is an unfair term, going against the very object of the contract, making it otherwise unexecutable from its inception. Para 40 में, therefore, we have no hesitation in setting aside the order passed by the National Commission. However, we are in agreement with the submission made by the Council, appearing for the respondents that the State Commission, without any basis, granted a sum of rupees 2.5 lakhs towards harassment and mental agony. We are of the view that no case for awarding amount under that head has been made out, as the respondents merely took a legal stand. In light of the aforesaid, the order impugned passed by the National Commission in FA number so and so stands set aside except to the extent of declining a sum of rupees 2.5 lakhs towards harassment and mental agony. The appeal stands allowed. और ये बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन और दिए इसमें फर्दर जो लास्ट पैराग्राफ में, before we part with this case, we would like to extend a word of caution to all the insurance companies on the mandatory compliance of clause 3 and 4 of the IRDA regulation 2002. Any non-compliance on the part of insurance companies would take away their right to plead repudiation of contract by placing reliance upon any of the terms and conditions included thereunder. ये आपने जैसा देखा ही होगा कि बहुत सारे इसमें लीगल एस्पेक्ट को डिस्कस किया गया है। कौन सी है ये जजमेंट, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो है टेक्सको मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, बाय द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस MM सुंदरेश, सिविल अपील नंबर A249 ऑफ 2022, और ये 9/11/2022 का डिसीजन है। बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और इसको जो है आप लोग कर दीजिए सेव इसके लिंक को जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक दें। आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल जजमेंट टू ऑल ऑफ यू। पर्टिकुलरली इसमें जो है बहुत सारे लॉ के कंसेप्ट जो है इसमें जो क्लियर किए गए जिनके बेसिस पे ये केस लॉ हुआ है, और ये आगे और बहुत सारे केसेस में भी ये कॉन्सेप्ट्स काम आ सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।